Ecoholics. In this video, we'll be continuing the same chapter, that is your Indian economy on the eve of independence. In our previous 3 videos, what we had learned about the targeted exploitation of the 3 sectors of our economy. Next, we learned about the features of Indian economy on the eve of independence. And in our recent video, what we learned about the status of agricultural sector on the eve of independence. Now, in this video, we'll be understanding about the status of industrial sector on the eve of independence. Under this, we'll be learning systematically how the industrial sector was exploited and targeted, and what was the status, how was the industrial sector left on the eve of independence. So we'll be understanding that under these headings, that is the decay of world famous traditional handicraft industry. You all know by now that India was famous for its handicraft industry. It was well known for its excellence, quality, variety of handicrafts, but it got exploited, or it was ruined under the British rule. That is, the industry or the handicraft sector got completely destroyed. Now the second heading is, we'll be understanding the bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunities. We'll be understanding the status of industrial sector under these points. Moving further, first we'll be understanding this, that is your first point. So our first point is discriminatory tariff policy of the state. State here means the British government. So what I'll tell you the outline कि basically उस time पे what happened. तो क्या हुआ था, हम लोग का जो Indian government or our Indian economy, the development or the colonial exploitation, it coincided with the industrial revolution with Britain. अब ब्रिटेन में industrial revolution हो रहा था. Okay, तो what this British government thought, they saw India as the best place to extract the resources, the raw materials, because these people, they needed the raw materials or the resources for the development of their industry in the Great Britain. So what happened basically, Britain में जो भी उस time पे industrial revolution चल रहा था, हमारे इंडिया से raw materials the Britishers were extracting the raw materials from our country and they were exporting this to their country for their development. Okay, so what basically happened, so the export of raw materials were free. अगर हमें अपनी कंट्री से उनकी कंट्री में रॉ मटेरियल्स भेजना था तो वो बिल्कुल फ्री था. ओके, और क्या था, इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू आवर कंट्री, ये भी फ्री था. अगर हमें इम्पोर्ट करना था, क्या करना था, ब्रिटिश गुड्स, सो दैट वाज आल्सो फ्री. इफ़ वी वांटेड टू गेट समथिंग फ्रॉम देयर कंट्री, हमें कुछ मंगाना था उनकी कंट्री से हमारे कंट्री में, तो वो बिल्कुल मतलब फ्री था, उसमें कोई हिंड्रेंसेस, कोई टैरिफ, कुछ भी नहीं था. सो क्या हुआ था, उनके गुड्स का डिमांड हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, मार्केट एक्सेस उनको ज़्यादा मिल रहा था हमारे कंट्री इंडिया में. लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, जो हमारे इंडियन गुड्स थे, जैसे हैंडीक्राफ्ट था जो हमारा, अगर हमें उसको एक्सपोर्ट करना था इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल्स, पहले हम क्या भेज रहे थे, रॉ मटेरियल्स, तो वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी टैक्स, बिना किसी हिंड्रेंसेस के, ड्यूटीज़ के बिल्कुल जा सकता था, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी. लेकिन अगर हमें अपना हैंडीक्राफ्ट, अपना वेल नोन जो हमारा एक्सीलेंस है जिस फील्ड में, हमें अगर उसको भेजना था, तो दैट वाज नॉट ओके. उसमें इतने ज़्यादा टैक्स टैरिफ लगे कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो वो वर्ल्ड वाइड नोन था फॉर इट्स वैरायटी एंड क्वालिटी, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, कि जो उनको ज़रूरत थी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा था, जा रहा था, लेकिन जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को उस टाइम पे ज़रूरत थी, रिकग्निशन चाहिए था, और जो मार्केट एक्सेस हमें मिलना चाहिए था, वी डिडंट गेट दैट. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, दैट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स was free, import of their goods
to our country, that was free, but if you wanted to export handicrafts to their country, that was not free, obviously, due to obvious reasons कि they wanted the resources for the development because it coincided with the industrial revolution in the Britain. That is why they followed the discriminatory policy. So first point is done. Our next point is disappearance of princely courts. This is very simple and you all can relate. What happened earlier was the नवाब्स, राजाज, महाराजा और जो ये सारे किंगडम्स होते थे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले, ये किंगडम, राजा, नवाब्स, इन लोग का राज था इंडियन इकोनॉमी पे. ओके मतलब डिफरेंट स्टेट्स इनके अंडर थे ऑफ द प्रिंस एंड द नवाब्स. सो व्हाट बेसिकली हैपेंड, ये लोग जो थे ये हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को दे यूज्ड टू पेट्रोनाइज अस, दे यूज्ड टू गिव द हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स सपोर्ट so that our handicraft industry could get stimulus and the industry could boom. But what happened after the British government came? So princely states, so basically what happened, these princely states were starting to disappear, and which led to decay of our handicraft industry because we were very famous for handicraft industry. So we'll be seeing that the end result is of the decaying of our handicraft industry only. So what happened, the rajas and maharajas, they used to provide support to our handicraft industry, but they started to disappear, which gradually led to the decay of handicraft industry. Now our third point is competition from machine made products. So competition from machine made products, it means कि जो ब्रिटिश गुड्स थे ये सारे प्रोडक्ट्स मशीन से बनाए गए थे. ओके सो ऑब्वियसली इनमें जो फिनिशिंग था और जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा कैपिटल गुड्स या मशीन्स जो थी वो बिल्कुल भी बहुत कम थी. तो क्या होता था, हमारे इंडिया में हाथ से चीज़ें बनती थी. दैट इज़ नोन एज द crafted थिंग्स. लेकिन जब वहाँ से गुड्स यहाँ आया जो मशीन से बना था, अच्छी मशीन से, एंड उनका क्वालिटी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी बन रहा था क्योंकि मशीन से बन रहा था, तो सारी नीड्स, ये सारी चीज़ें भी पूरी हो रही थी. तो हमारे यहाँ के वर्कर्स हाथ से चीज़ें बनाते थे, हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बनाते थे, लेकिन उनके वहाँ से जो सामान आता था दैट वाज मेड फ्रॉम द मशीन्स ओनली. सो व्हाट हैपेंड, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था, लेकिन उनके लिए हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सेस हो गया था. बिकॉज ऑफ दैट हाथ से बनी हुई चीज़ों को लोग कम लेने लग गए, एंड दीज पीपल स्टार्टेड गेटिंग मशीन मेड प्रोडक्ट्स, सो विच again forced the handcrafted the people who used to manufacture goods from their hands, that is the handcrafted products, to shut down, and that again led to the the decay of the handcrafted industry of India. Now our fourth point is new patterns of demand. क्या हुआ था जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो ब्रिटिश कल्चर भी साथ में लेके आए. तो हमारे इंडिया के कुछ लोग थे, दे डिड, हमारे जो इंडियन कल्चर था, जो ट्रेडिशनल कल्चर था, उससे वो शिफ्ट होने लगा टूवर्ड्स ब्रिटिश कल्चर. देयर वर सम पीपल हु एक्चुअली लाइक्ड ब्रिटिश कल्चर, सो उनकी नीड्स और डिमांड्स उस तरह के लिए हो गई. मतलब फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश गुड्स था, जो वो लोग न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे थे हमारे इंडिया में, उनके लिए डिमांड ज़्यादा होने लगे क्योंकि कल्चरल शिफ्ट देखने को मिला. यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर से कुछ लोग ब्रिटिश कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, बिकॉज ऑफ विच डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड्स. तो क्या हुआ, इवेंचुअली जो हमारे ट्रेडिशनल जो कल्चरल चीज़ें हमारे इधर बनती थी वो उनके गुड्स के साथ रिप्लेस हो गई, और जो चीज़ें इंडियन वर्कर्स बनाते थे दे अल्टीमेटली पेरिश्ड. दैट is what happened because of new patterns of demand. Now our last point is introduction of railways in India. So the introduction of railways in India, what basically happened, जो अब क्योंकि अब रेलवेज बन गए थे तो डिस्टेंस जो था एक गुड को दूसरे जगह पे पहुंचाने का वो कम हो गया.
तो क्या हुआ, जो लो कॉस्ट ब्रिटिश गुड्स थे जो मशीन से बन के आते थे, फिनिश गुड्स, और उनके प्राइस भी बहुत कम होते थे, ठीक है, तो इनकी डिमांड ज़्यादा होने लगी क्योंकि वो जल्दी लोगों की पहुंच में था। और हमारे जो वर्कर्स थे, इंडियन वर्कर्स जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से चीज़ें बनाते थे, वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गई क्योंकि एक तो वो एक्सपेंसिव भी थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर और लेबर लगता था और वो बहुत कम ही प्रोडक्ट बनते थे, बट द क्वालिटी एंड द वैरायटी वाज मार्वलस। बट व्हाट हैपेंड, क्योंकि अब डिस्टेंस कम हो गया तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गुड्स पहुंचने लग गए, तो रेलवेज़ की वजह से, डिस्टेंस कम होने की वजह से लो प्राइस जो ब्रिटिश गुड्स थे वो लोगों के पास ज़्यादा एक्सेस में, उन लोग का रीच में आने लग गए, तो डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अगर इन अ कंसाइज वे इफ वी लुक एट द एक्सप्लॉयटेशन, सो व्हाट वी लर्नड, तो ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया को ऐसे देखते थे एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ताकि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाके अपने वहाँ डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद उनके वहाँ जो गुड्स बनता था उसके लिए, उस गुड्स को, उन गुड्स को बेचने के लिए उनको मार्केट भी चाहिए था, सो वो इंडिया को एज अ पोटेंशियल मार्केट देखते थे और अपने सारे गुड्स यहाँ ले आए, जिसकी वजह से हमारा जो हैंड क्राफ्टेड मार्केट था वो बिल्कुल ही पेरिश हो गया। इट गॉट एक्सप्लॉयटेड वेरी बैडली, सो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द मार्केट ऑफ देयर गुड्स in our country India. This is basically what happened, what we learned. This is the small part of it. Now next what we'll be learning about how was the growth. Okay, so these were the points which led to the decay of handicraft industry. Now we'll be looking at the growth aspect also. Next and the last heading for today is the bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunities. This is also very easy to understand. Bleak growth मतलब बिल्कुल नाम मात्र का growth, that is the growth which is very marginal or notional, very little growth. बहुत ज़्यादा कम growth थी modern industries में. Okay, ये क्यों था? क्योंकि हमारे पास investment नहीं था उतना इन industries को लेके. क्या हुआ था उस टाइम पे, कुछ इंडस्ट्रीज फॉर सपोज शुगर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज थी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, स्ट्रैटेजिकली वो काम कर रही थी, स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट दे रही थी कौन से एरियाज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज और या कम्युनिकेशंस, ताकि उनके गुड्स हमारे मार्केट में पहुंच सके। रेलवेज़ क्यों? क्योंकि उनके गुड्स अच्छे तरह से अलग अलग जगह में हमारे इंडिया के पहुंच सकेंगे। कम्युनिकेशन दे, सो दैट द communication process ki yeah these goods are available, and all these things created a broad market for their goods in our country India. And जो capital goods था, that capital goods, the production of capital goods also, it showed a very few growth at that point of time, क्योंकि we did not have enough investment. Only those areas which were beneficial for the British government, they used to invest only on those areas, and it led to basically very little growth in the modern industrial sector. And there was obviously, of course, few industries which grew, that is the iron and steel, sugar industry, but rest other industries, it showed a very little growth. So that is the meaning of bleak growth of modern industry. But while understanding the exploitation of industrial sector, we need to understand the term systematic de-industrialization. There was a motive behind the systematic de-industrialization, that is, जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, दैट वाज वेरी स्ट्रेटेजिक, दैट वाज वेरी प्लान्ड, एंड व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हुआ था. सो द मोटिव वाज क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल था, वी वर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. सो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वेंट फॉर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर पॉइंट, टू create market access for their goods in our country. That is why
they had done the systematic de-industrialization, which eventually led to very low growth of modern industry and the decay of world famous traditional handicraft Indian industries. I hope you liked this video. Please comment and subscribe to our channel Ecoholics. Thank you.